सत श्री अकाल नमस्कार पंजाब स्टार टीवी ते तुहानू सब नू जी आयां नू। शुरुआत करते हैं कैनेडा बुलेटिन दी हैडलाइनस दे नाल। ओंटारियो विच हाई स्कूल टीचर्स की नुमाइंदगी करने वाली यूनीयन और प्रोविंशियल सरकार दरमियान समझौता चढ़िया नेपरे। पिछले काफ़ी लंबे समय तो पिया होया सी अड़िक्का। ओंटारियो दे विच 304 होर कोविड-19 के मामले आए सामने। ब्रिटिश कोलंबिया विच स्थिति कंट्रोल हेठ 48 घंटे च आए 16 मामले। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का बयान कहा सब कुछ तरतीबवार सावधानी दे नाल जावेगा। खोलिया लोकां ते बिजनेस अदारियां नूं भी जिम्मेवारी समझण दी कीती अपील। हुण जाने खबरां विस्तार दे नाल। ओंटारियो विच हाई स्कूल टीचर्स की नुमाइंदगी करने वाली यूनीयन वालों प्रोविंशियल सरकार नाल नवीं डील की पुष्टि की गई है। अध्यापकों ते सपोर्ट स्टाफ जिसकी नुमाइंदगी भी ओंटारियो सैकेंडरी टीचर्स फैडरेशन वालों की जाती है, उस वालों इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया है। इस समझौते को सिरे चढ़न में 6 महीनों तो भी वध का समा लग्या है ते इस दौरान गलबात कई तरह के उतरा चढ़ाव चों लंघती हुई भी दिखाई देती। अध्यापकों ने कई हफ्तिਆਂ तक सिलसिलेवार हड़तालां कीतियां, पर आखिरकार कोविड-19 महामारी कारण उन्होंने इन्हां गतिविधियों उत्ते रोक लाउणी पई। OSSTF के प्रेजिडेंट हार्वे बिशॉफ ने कहा है कि भावें डील सही नहीं है, पर इस नाल वो स्थिरता मिलेगी जिहड़ी अजोके औकड़ां वाले समय च लोड़ीदी है। मार्खम के घर विच होए धमाके तो बाद अग लगन मगरों 3 परिवारक मैंबर जख्मी होए हैं, पर एक 12 साला लड़के की अजे तक भाल जारी है, उसका पता नहीं लग सकिया। ये जानकारी यॉर्क रीजन पुलिस ने दी है। एतवार सवेरे लोगों ने बर ओक एवेन्यू स्थित घर विच जोरदार धमाका सुनिया, जिस दे बाद विच अग भी लगती देखी गई। इस तो बाद 6 साला जीर हामिद, 14 साला अहमद हामिद ते उन्हां दी 41 साला मां शिया हामिद नूं गंभीर हालत विच हस्पताल भेजा गया। 6 साला बच्चे नूं पहलां ही पुलिस वालों लड़की दस्सिया गया सी, जबकि वो लड़का सी। पुलिस ने दस्सिया कि इस घर विच 5 होर लोकां दा परिवार रहिंदा सी। अग लगण समय बच्चों का पिता घर तो बाहर सी। परिवार का तीजा बच्चा 12 साला आरइन हामिद अजे लापता है। फायर मार्शल के ऑफिस वालों की गई जांच और सुपरवाइजर जैफ टैबी ने आख्या है कि इस समय लापता बच्चे की भाल करना साडी मुख तरजीह है। टैबी ने कहा कि धमाका जरूर होया, पर यह किस तरह होया इस बारे उन्हां कोलों कोई वेरवे जारी नहीं किए गए। फायर अमले वालों बेसमेंट में लापता बच्चे की भाल करने का फैसला किया गया है तो उन्होंने आस भी सी कि उसकी लाश उत्थे मिल सकती है। उन्होंने उसके जिउंदे मिलन की कोई आस नहीं है। एयर कैनेडा वालों अपनी वर्कफोर्स घट्टो घट अद्धी घटा दिते जाने के ऐलान तो बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आख्या है कि फैडरल सरकार एयरलाइनस लई होर मदद मुहैया करवाउण लई वचनबद्ध है। ईमेल किए एक बयान में एयर कैनेडा ने शुक्रवार को आख्या सी कि 7 जून तक वो अपने अमले में 50 तो 60% तक स्टाफ की छांगी कर देगी। इस तो भाव यह है कि 22,800 लोग रोजगार तो वेले हो जाएंगे। इस उत्ते ट्रूडो ने आख्या कि कोविड-19 महामारी नाल कुछ एरियाज होरनां नालों ज़्यादा प्रभावित होए ने। एयरलाइनस महामारी तो पहला बहुत वधिया काम कर रही सन। इस दौरान ट्रूडो ने यह ऐलान भी किया है कि कोविड-19 संबंधी वैक्सीन के देश में पहले ट्रायल जो कि काफ़ी हद तक सफल रहे ने। इस दे नाल ही उन्हां मई महीने लिए कैनेडा चाइल्ड बेनीफिट में $300 के वाधे का ऐलान किया। ट्रूडो ने आख्या कि सानू इस सब वास्ते एयरलाइनस नूं वध मदद मुहैया करवानी होगी। कैनेडा भर दे विच नैशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। इस दौरान ही ओंटारियो की ट्रांसपोर्ट मंत्री का बयान भी सामने आया, जिन्हां लोगों को अपील की कि जेकर सड़कां खाली हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि असीं स्टंट करिए ते गलत ड्राइविंग करिए। उन्होंने आख्या कि गलत ड्राइविंग और स्टंट करने वालों विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लोगों की सुरक्षा ही सरकार की सब तो पहली तरजीह है। This week in Canada is National Road Safety Week. Nothing is more important than protecting the health and well-being of Ontarians. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, our government has taken decisive action to protect the health and safety of Ontarians and especially our frontline workers. That's why it's incredibly disappointing to see the rise in stunt driving and street racing on our roads in the past few weeks. Empty roads are not an invitation to speed or drive impaired. This type of irresponsible, reckless behavior endangers you and everyone around you. We all need to follow the rules of the road. It doesn't matter what time of day you are driving or how many vehicles are on the road. The speed limit always applies.
Ontario has strict penalties when it comes to dangerous driving, such as license suspensions, car impoundment, and more. Our frontline workers have enough on their plates as it is. So let's all do our part and obey the rules of the road. We're all in this together. ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਟੰਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। This week is Canada Road Safety Week. Last year, we had 64 people killed on OPP policed roadways in speed-related collisions. So far this year, the OPP have charged almost 3,000 people with stunt driving, which is driving 50 kilometers an hour or more over the speed limit. This is putting our road users at grave risk, unnecessary risk. And if you're caught stunt driving, you will immediately have your vehicle impounded for 7 days, your license suspended immediately for 7 days, face fines of up to $2,000 and 6 demerit points, or even worse. You could be responsible for seriously injuring or killing somebody on our roadways. Let's all do our part this week and drive safe, obey our laws, and ensure that Ontario remain amongst the safest roads in our entire country. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। And so I think that what you'll find tomorrow is the number of people that are involved, the number of businesses involved is manageable. I think that you'll find not everybody opens tomorrow because they may not be ready or decide just not to open. But I think what will open tomorrow will be manageable. And, I think that then we can see how the numbers go. And that's the thing that's really important, is to see what happens when we do have this modest reopening, and keep a very close eye on that before we decide to rush into further reopenings. But that's the biggest challenge, I think. And if businesses accept personal responsibility, which I believe they will for physical distancing, and people do the same, I think it should be fine. But we're going to be pushing ahead with the active TO program because I think it's something that is a good thing to do. It's appropriate at the hopefully the tail end of this pandemic to give people more room to go out and be outside. And we will make adjustments and make sure that we are considerate of everybody, including drivers, but also of pedestrians and cyclists, to keep everybody safe. Yeah. One other thing I should say, by the way, I think that there were people who were irritated yesterday, and I understand that because, we just made the one change, and I think it will help today. But I was out and about looking at the other side where Bayview and River Street and so on were closed for pedestrian and cycling. And people were happy. There were lots of people out, families and so on, and they were having a really good time. I said it was a great time to be a politician because people were actually happy. I think it was just the weather. It was nothing to do with me, but it was just a good time to be a politician because people were actually happy after all these weeks of receiving bad news and being cooped up. ਮੂਲੀ ਵਾਈਕਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਉੱਤੇ MPP ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਿਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। For decades, Tamil people have experienced a campaign of genocide at the hands of the Sri Lankan government. From the burning of the Jaffna Library, to the anti-Tamil violence in what is known as Black July in 1983, to the thousands of Tamils killed in the Mullawaikal massacre. Tamils have faced years of violence, of being forcibly disappeared, and genocide. And that's why on May 18th, on Tamil Genocide Remembrance Day, I will be joining with Tamils across the world to light a lamp and call for an international inquiry into these crimes against humanity, these war crimes, and these acts of genocide carried out against the Tamil people by the Sri Lankan government. It is only with accountability that we can have truth and justice. Let us all work for a future where Tamil people can live with respect, with dignity, and with freedom. Today marks 11 years since the Mullawaikal massacre at the end of a decades-long civil war
in Sri Lanka. Today, New Democrats join Tamil community members to offer our solidarity and our support in your quest for justice and recognition of the Tamil genocide. 11 years ago, I stood with community leaders and Tamil youth when you successfully led a blockade of the Gardner Expressway in protest of the genocide and as a demand for political action and justice. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਰੀਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੋਲਫਰਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਗੋਲਫ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। It just feels nice to get out to walk a beautiful course and get a little exercise. I just look forward to enjoying good weather and some fun golf games. My golf is going to suck, but I still enjoy it and I'm going to have fun. You can be friendly, but you don't have to be close to anybody. You're not doing any kind of contact. It's just you and the golf ball. It's a little difficult, but it's all right. It's better than no golf at all, so I'll take it. From what we've been seeing, everybody's been following the rules and they've been maintaining their social distancing, keeping 2 meters apart. Everybody's just happy to get out and be playing golf. Hopefully people see a little sign of hope in this, a little sign of spring being here, and we have to make sure everybody's feeling happier after a period of confinement. You have a boat on the island. How do you get the island? How do you space the people to transport them back and forth? Sharing the dock space, sharing the facilities. Be mindful of the distance you're keeping from them. Try and be mindful of the things that you may touch or the facilities that you may use that other people are using them. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਲੀਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ $1 ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। Well, they're letting so many Canadians down. It is true that there are millions of people who are accessing this benefit. Conservatives supported these types of emergency benefits that will see people through this crisis. But there are so many barriers to people being able to work or to receive any number of the benefits that they've announced. For example, if you work for a store that is offering you some shifts and you earn $1 more than 1,000, you lose the entire benefit. Small business owners who don't have a business bank account aren't eligible for the loans. If they don't have a CRA payroll number, they can't access the wage subsidy. So we understand that back in March, many of these programs were designed quickly. What we're saying here is we're in the middle of May now. We've got to be removing some of these barriers to get help to people. Well, it's frustrating that it's taking this long, and people are going through these hardships in real time. For example, the rental subsidy, the rental benefit that they offered businesses was only eligible if you've experienced a 70% decline in revenue. There are so many businesses that have adapted, that are delivering products or doing store pickups, so they're still earning some revenue, and they're actually being told that they would be better off if they closed their doors entirely. We don't want these programs to have barriers to people finding a way to continue to provide goods and services and keep people employed. So we do want to see more flexibility built. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।